Good morning, everybody. Welcome back to our lecture. So we have discussed that we will be discussing our question paper in a span of time. So that is the previous year question, not the previous year question, but this year question. We will be discussing paper 1 of different services. Okay. In a short span of time, we'll be discussing IBPS. So I think where we have left the four prepositions. Yeah. So I think we have done till completion of the sentence, and we will be doing today prepositions and determinants. So in the class, I've already discussed preposition and determinants. I hope that's clear. So I want that you practice by yourself, and at home you just practice it. Not right now, but after we will be solving this paper. After that, just practice it by yourself so that you can get a hang of how questions come in. So, question number 91 with person and determinants, seeing towards the comprehension and how to comprehend. Maybe that's why there is this disturbance. Okay, so let's start with our first question. That is question number 91. And let's see what the question states. So it says preposition and determinants. Okay. So the very first thing the question is, it's mentioned is the directions. I've told you whenever you're going to solve the question, just read out the directions. Okay. So as per this, that each of the following sentences in this section, what they have, it has a blank space with 4 options. Now you have to select whichever preposition or determiner you consider the most appropriate for the blank space and indicate your answers on the answer sheet accordingly. You have to mark your response accordingly. Okay. So you have 4 options over here. यहाँ पे आपके पास में 4 options है. एक particular statement है आपके पास में. If you guys have attended that preposition lecture, if you have seen that live video, then of course you'll be able to solve it because I have discussed many of these. So let's see. The very first is, it is, he succeeded dash dint of perseverance and hard work. अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में पूछा है preposition के बारे में, हमें इसमें करेक्ट preposition fill करना है. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि he succeeded dash dint of perseverance and hard work. अब वो कैसे succeed किया है? Yeah. Sorry for that. So it is, he succeeded dash dint of perseverance and hard work. अब इसके अंदर क्या आएगा? That he succeeded with what? With the dint of perseverance or hard work. With is also appropriate. अब देखो, he succeeded in dint of perseverance and hard work. अब इनका अगर हमने यूज में पढ़ा था कि जो हम इनको यूज करते हैं वो हम स्टेटमेंट्स में नहीं करते हैं. इन दैट मतलब इनका मतलब क्या होता है? उसमें रखा है में. ठीक है. तो यहाँ पे हम इनको यूज नहीं करेंगे बिकॉज इनअप्रोप्रिएट नहीं है. इन विल बी इनकरेक्ट. अब द नेक्स्ट थिंग इज, he succeeded of dint of perseverance and hard work. He succeeded of dint of perseverance and hard work. Of dint of perseverance, again this statement makes no sense, and the use of is also inappropriate. Okay. अब देखो by पे आते हैं. He succeeded by dint of perseverance and hard work. He succeeded
so sorry for that again. Okay, let's see. अब देखो यहाँ लिखा है he succeeded by dint of perseverance and hard work. How he succeeded? He succeeded by dint of perseverance और hard work के through वो succeed हुआ. अब next is he succeeded with dint of perseverance and hard work. कैसे? Perseverance और hard work से वो succeed हुआ. There will be two options which can be correct, either by and with. But what we will fit in this? He succeeded by what? By what? जब भी हम कोई भी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, by doing this this happened, ठीक है? क्या किया उसने? He did this. By doing this particular thing, this thing happened. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेंगे? That he succeeded by what? He succeeded by the dint of perseverance and let's move on to question number 92. अब question number 92 states dash his ill health he retired from his business. अब इसका मतलब क्या है कि उसकी ill health की वजह से वो business से क्या लिया? He took that person to retirement. तो reason for retirement, the reason for retirement is ill health. अब देखो इस statement के according यहाँ पे क्या आएगा? With regard to his ill health, he retired from the business. With regard to what? With regard to his ill health, he retired. Ab due to his ill health, he retired from business. As to his ill health, he retired from the business. अब देखो, due to his ill health, उसकी ill health की वजह से, reason क्या था? Ill health. So due to his ill health, he retired from what? He retired from his business. Okay. Ab similarly, when we come to give me yeah. So let's move forward to question number 93. These are the good rules to live. ठीक है? These are what? These are good rules to live. अब live के बाद हमारा dash है, ठीक है? तो these are the good rules to live with, live by, live off and live in. ठीक है? जब भी हम बोलते हैं ना these are the good rules to live in या फिर these are the good rules to live by, तो answer will be what? That they are what? They are good rules to how? They are good rules to live by. While discussing the preposition, I have discussed this example of how the statement is correct. So it says कि ये अच्छे rule हैं, by through what? By through which we can live. So these are what? These are good rules by through we can live. Okay. Now let's move forward to question number 94. It says people who are averse dash hard work do not succeed in life. People who are averse dash hard work do not succeed in life. अब देखो averse मतलब क्या होता है? Aversing means fearing. ठीक है? Let me just write it properly. You can add a new verb to your word to your vocabulary as well. Yeah. So it says aversion means fear. Okay. So people who are fearful या फिर who fear, they do not succeed. They who fear what? Fear hard work, do not succeed in life. तो जो लोग क्या करते हैं? जो लोग डरते हैं, what they do not succeed in life. So this statement says that. अब देखो यहाँ पे हम क्या फिट करेंगे? Let's try with option number A, B, C and D. People who fear, people who are averse to hard work do not succeed in life. Who are averse to what? Who are averse to hard work. अब next statement says people who are averse with hard work, who are fearful with hard work, do not succeed in life. Up next is people who are averse of hard work, they do not succeed in life. And next is people who are averse regarding hard work do not succeed in life. अब why this we came to know that with is totally incorrect. ठीक है? With तो पूरा incorrect है because अगर आप
if you have read it properly, if you have read the use of prepositions properly, and if you know what kind of sentence it is and how the sentence makes sense to you, the sentence is inappropriate. Appropriate है ही नहीं. तो यहाँ पे देखो, people who are averse with hard work do not succeed in life. Who are fearful with hard work? No. People who are fearful, averse to what? Averse to hard work, they do not succeed in life. What they are aversing is they are aversing to hard work. वो नहीं कर रहे हैं hard work, they are fearful of it. People who are averse regarding hard work do not succeed in life. अब this question, in this question, you will be having three options. ठीक है, with अगर आप हटा दोगे, you will be having confusion in these three. In option number A, in option number C, and in option number D. यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स में आपको डायरेक्ट कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज थ्री ऑफ देम इन सम वन वे और द अनदर दे सीम्स टू बी लाइक एप्रोप्रिएट. ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे है, people who are averse to hard work do not succeed in life. People who are averse of hard work do not succeed in life. People who are averse regarding hard work do not succeed in life. अब तीन ऑप्शन बचते हैं हमारे पास और तीनों ही स्टेटमेंट में सेंस बना रहे. ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चंस जो है दे आर वेरी कंफ्यूजिंग. इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन टॉपिक देन ओनली सॉल्व इट, अदरवाइज यू नेवर नो व्हाट द आंसर विल बी. तो इसमें क्या करो, या तो दीज टू ऑप्शन, बाय द वे, who are too hard work, जो हार्ड वर्क से डरते हैं, they do not succeed in life. Okay, so the correct answer is 2, but such questions you will face, like this question number 94. Such questions you will face every time. हर एक टॉपिक में, जैसे कि ये वाला है हमारा preposition and determinants, you will be getting 1 to 3 questions. Expect 3 questions minimum in your examination, where you will be very confused about 3 options. ठीक है, आप you will be able to eliminate 1 option, but there will be 3 options which will be very confusing for you. So at that point of time, what you do is this one is best. If you have thoroughly revised the topic, then only I can say that you will be able to do it. Otherwise, this UPSC conducts this exam. वो ऐसे question आपको देंगे ही. ठीक है, ये examination में कुछ questions ऐसे आते ही हैं, which are just like bouncers. So you have to what? The correct answer is 2. And at the point of time, if you feel like there is such question, better leave it. Instead of getting a negative marking, better what? Leave it. Okay. Otherwise, if you have read the exact statement somewhere in the paper or anywhere, then you can try to attempt it. Okay. I hope this is clear. Let's move to 95. A woman who always connives her children to hide their fault is the worst enemy. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है. Let me just clear it. If any lady is there जो क्या कर रही है, अपने बच्चों के क्या कर रही है, फॉल्ट्स को छुपा रही है, वो उन सबसे क्या है, एनिमी है. ठीक है, अगर इफ यू आर अ गुड मदर, इफ यू आर मतलब इफ यू आर अ गुड वुमेन या फिर यू आर अ गुड मदर, तो व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट हाइड देयर फॉल्ट्स, यू विल टेल देम दैट दिस इज योर फॉल्ट. ठीक है, तो आप उनकी फॉल्ट्स को हाइड नहीं करोगे. दिस सेज वुमेन who always connives dash her children to hide their faults is their worst enemy. जो हमेशा क्या बोलती है कि आप अपने जो फॉल्ट्स हैं उनको हाइड करो. ठीक है, फिर उनको बताती नहीं है, उनकी सबसे क्या है, दैट इज देयर वर्स्ट एनिमी. ओके, अब देखो who always connives, अब यहाँ पे डैश है हमारे पास, अब इस अकॉर्डिंग देखेंगे, with her children, who always connives with her children. The first thing is with. Who always connives by her children. By does not make sense, eliminated. B option गया. Who always connives at her children to hide their fault. Connives अपने बच्चों के साथ ही तो करेगी ना, with her children करेगी ना. Never be कि वो by the children करेगी something, या फिर at her children करेगी. अब next is D is who always connives for her children to hide their fault. Always connives what? Who always connives for her children. Connives with her children is appropriate, neither for nor at. Answer will be a woman who always connives with her children. ठीक है, उन बच्चे कुछ भी गलती कर रहे हो, but the person is not pointing them out. So what is it? It is their worst enemy, of course. Next, moving forward to question number 96. It states, we travel dash at Mr. Barthwal's car. Okay,
तो वी ट्रैवल, हमने कहीं पे ट्रैवल किया है, कहाँ पे ट्रैवल किया है हमने, कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल किया है, किसकी कार में, मिस्टर बर्थवाल्स कार। तो आंसर विल बी वी ट्रैवल्ड इन कार, हमने उनकी कार में, वी ट्रैवल्ड इन हिज कार। ओके, वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर बर्थवाल्स कार, तो आंसर विल बी इन। Yeah. Up next is 97. We travel at तो हम किसी प्लेस के लिए यूज करेंगे ना, we traveled at there, ठीक है। अब with Mr. बर्थवाल्स कार, मिस्टर बर्थवाल की कार के साथ में आप थोड़े ट्रैवल करोगे। इनसाइड, उसके मतलब इनसाइड इज व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनली अबाउट थिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वी ट्रैवल्ड इन, उनकी गाड़ी में हमने ट्रैवल किया। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो स्टेटमेंट होते हैं, so sorry, there's a lot of disturbance. I don't know what's wrong. Is it the weather or something? Yeah. What we were discussing question number 96. So it states that we travel in Mr. Barthwal's car. ठीक है। अब whenever I was telling you कि whenever you have a problem in any question जिसको आप interpret नहीं कर पा रहे हो या फिर जिसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, try to solve it in Hindi. First of all, convert the statement right away in your mind in Hindi. It happens what first of all you get a clear understanding of what you are solving. ठीक है। जब आपको समझ आ जाएगा, then put these. Then I've told you we have 4 methods. Either you will be left with 2 options or you will be left with 3 options or 1 option only. क्योंकि अगर क्या होगा, most of the time the question be like ये गलत, ये वाला ऑप्शन भी फिट नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी फिट नहीं होगा, you will be left with just option number C. तो उस तरह से क्या होगा ना, when you will put options to your statement, you will get a good clarity of it, that which one is correct and which one is not. Okay, let's move forward. So the answer will be of 96. It will be in. We traveled in. अब देखो 9 हमारा है, सुरेश came. How he came home? He came home by train. Simple. अभी हमने जब किया था ना, तो हमने उसमें एक चीज थी कि हम हमसे किस स्टेटमेंट में when we talked of adverb ना, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चंस आते थे। It talks about when, it talks about how, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये चीज कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे आई, सुरेश came home. How Suresh came home? By train. So when you solve these, it is very simple. अगर आप ऐसे अपने आपको आप एग्जामिनेशन हॉल में you will solve this question. Suresh came home on train, with train, by train, of train. When you say how Suresh came home, your answer will be instinctively, it will be he came home by train. So the answer will be simple, it will be by train. So option number C is correct. Question number 94 जैसे जो questions होते हैं ना, they are quite tricky because उसमें क्या है, multiple answers can be correct. But as this is question number 97 जो हमारा ये है, it is a simple statement, ठीक है। तो instead of when you get such question ना, try to focus on such questions. ये 94 जैसे questions को if you leave, then you have a chance कि आप इस चीज को गलत नहीं करके आओ. Don't get it incorrect, like question number 97. Don't make it incorrect. What you have to do is you have to make sure if you're leaving such questions as of this 94, you are correcting questions as of 97. Okay. Now next is 98. Few things are impossible to achieve with diligence and skill, for achieve with diligence and skill, in achieve with diligence and skill, on to achieve with diligence and skill. अब देखो जब हम ये चीज बोलते हैं that few things are impossible to achieve, few things are impossible to achieve. Few things क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है which are impossible to achieve with diligence. Okay, there are a lot of things which are impossible to achieve with diligence. So the answer will be what? Straight away पता चल जाएगा
few things are impossible to achieve. Statement ही हमारा अगर हम normal life में भी अपना ये statement use करेंगे तो what we will say, we will still, then we will say still, then also we will say what, that few things are impossible to achieve. Now let's see on question number 99. It is natural for everyone to aspire dash distinction. What it says, what it is natural for everyone to aspire with distinction, about distinction, into distinction or for distinction. अब हर किसी की क्या है, everyone can aspire for something. Aspire मतलब हर किसी की किसी कुछ ना कुछ क्या हो सकती है. Everyone can have certain kind of aspires, ख्वाहिश किसी भी तरह की, ठीक है. तो it is natural for everyone what, सबके लिए natural क्या है, to aspire for what, aspire for distinction. Certain question put that whenever, for example, this is the statement ना, तो certain question what you have to do, इन questions को आप questions में convert कर लो. जैसे कि ये 99 एक statement दिया है ना, just convert it into a question. It is natural for everyone to aspire what? It is natural for everyone to aspire for distinction. To aspire for what? Aspire for distinction. Simple. क्या है सबके लिए aspire करना natural? Distinction. So answer will be what? Answer will be for. Up next is, he is liable dash his wife's death. He is liable dash his wife's death. अब देखो वो liable है किसके लिए, उसकी wife की deaths के लिए. He is liable with his wife's death, at his wife's death, for his wife's death. अब देखो he is liable at his wife's death, तो ये add तो it doesn't make sense, हम इसको straight away हटा देंगे. Next हमारे पास बचता है he is liable for his wife's death. Can be correct हो सकता है, ठीक है. Let's take this as option, हमारा one एक choice है हमारी ये. अब he is liable to his wife's death, वो अपनी to his wife's death पे वो क्या है, he is liable. Again two doesn't make sense, we will eliminate it. He is liable to his wife's death. अब next देखो, he is liable with his wife's death. Next statement stays was, he is liable with his wife's death. वो liable किस चीज के लिए है, is liable with his wife's death. अब this can also be the answer. Now what you guys have to do, I have discussed these 9 questions with you. You will tell me the correct answer of part number question number 100. That he is liable for his wife's death होगा या फिर he is liable with his wife's death होगा. Okay, I hope this is clear. If you have any doubt, and please make sure you'll tell me the answer of question number 100. Okay, you will tell me the answer कि इन दोनों में से option number A और option number C में से क्या correct answer होगा. I have eliminated, I have given you the hint that option number B and option number D नहीं होगा. You have to tell me A और C में से क्या correct answer है. Okay, I hope the preposition वाला topic, if you guys have read it, this sheet solving these questions is, it's very easy. Okay, very first thing you have to keep in mind is the use of prepositions, and second thing you have to keep in mind is the sense of statement. You have to keep in mind only 2 things, whether the statement is making appropriate sense or it's making inappropriate sense. Okay, I hope this is clear. If you still have any doubt to anything in this preposition and determiners with respect to the questions, let me know. If you don't have any, if you don't have any regular doubt with respect to these, and still you have any doubt with regard to the topic prepositions, then please go and watch the prepositions video which we have posted. And if still you have any doubt, come down. Next is comprehension. अब देखो comprehension में हमने पढ़ा कि देखो हर एग्जाम में you will get comprehension. ठीक है, comprehension is something जो आपको state में भी मिलेगा, जो आपको central में भी मिलेगा, जो आपको हर जगह पे मिलेगा, wherever you will go. Because comprehension related questions, what they are, very first thing, they are scoring, they are highly scoring. Comprehension में I have told you there is a rule. ठीक है, you have to only use what, you have to only use the words which are what, which are given in your comprehension. अपने उस कॉम्प्रीहेंशन से अलग आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो कॉम्प्रीहेंशन दिया ही गया इसलिए. ठीक है, अगर उनको आपका ही एनालिसिस चाहिए होता कि व्हाट यू थिंक एंड व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन देते ही क्यों, वो आंसर नहीं लिख पाते फर्स्ट. So when you have this comprehension stuff now, whenever you get a comprehension question, make sure each and every one
and every answer that I mean even a single word of the topic must be there in your comprehension. Okay, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट दे दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पे इसका मतलब क्या है, पैसेज में क्या इम्प्लाई कर रहा है, फिर यू यूज यहाँ पे आप अपने दिमाग से करो कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है उस अकॉर्डिंग उसके अंदर करो. बट द अदर क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन इसको रीड करेंगे उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे, it can be non-living, it can be natural surrounding, it can be physical factor. एबायोटिक बात सकता है, ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज क्या वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन में तीनों में से एक भी वर्ड है, अगर है तो वो हमारा आंसर होगा, उसके अलावा आपके दिमाग में जितनी भी चीजें उसको हटा दो. इट्स ऑफ नो गुड यूज टू यू, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन में अपनी से आंसर लगाओगे दिस कॉम्प्रिहेंशन इज ऑफ यूज. वो क्वेश्चन लिख दिया है इसका. ओके, लेट्स स्टार्ट द पैसेज नंबर 1. The direction says that in this section you have what? You have two short passages. The very first passage is this, and the very next short passage is this. It is short, still it is as per them. Okay. After each passage, you will find some items based on passage. You will complete the passage. You will find items. Okay. Items are the questions. These are their item numbers, of course. First, read the passage and answer the items. You have to read this passage and you have to answer them accordingly. You are required to stick your answer based on the content of the passage. See, here it is mentioned that, just give me a minute. Yeah. Contents of passage के basis पे आपको अपना करना है, ठीक है. You are required to select your answers based on the contents of passage. अगर आप passage की contents के basis पे नहीं करोगे, and opinion of यहाँ पे author का opinion चाहिए, जिसके जहाँ पैराग्राफ किया गया है, जहाँ से भी एक्सर्प्ट किया गया है, वहां से आपका जो है आपका उनका चाहिए. आपका अपना पर्सनल ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग दिस पैराग्राफ. ओके, let's read the passage and let's solve. अब देखो, whenever you solve a passage, now the very first thing you should do, you should read the questions first, because what it will help, आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका आंसर से है. You will take it. First of all, what you will do when we read the passage first and then read the question, उसके drawback. पहले आपको passage तो read कर लोगे, then when you will read the questions ना, at that point of time you will get confused कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे आंसर कहाँ पे, ये तो इस पर्टिकुलर लाइन में है या फिर इस पर्टिकुलर लाइन में. You will confuse about this. So this is something that you don't have to do. The way you have to do over here is कि आपको पहले अपने क्वेश्चन रीड आउट चाहिए एंड देन आपको अपना पैसेज रीड आउट करना चाहिए. उससे यू विल नो कि यहाँ पे अगर पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रेफर टू व्हाट, वेदर इट इज लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल सराउंडिंग और फिजिकल. जब आप इसको रीड करोगे तो here in this line you will see that A by components comprising physical factor. So refers to what? It refers to physical factor. तो आपको पहले ही पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ पे है. So that is one. What we get is one plus point है आपके पास में. It's kind of a plus point for you guys. So better है, और drawback face करने से अच्छा है आप इसको ऐसे करो. Okay. So let's read the question. That is 101. It is the general tone of the passages. Passage का tone कैसा है? अब आपको पहले ही पता चल गया कि आपको passage में analyze क्या करना है, कि passage हमारा है कैसा. Whether our passage is critical, criticize कर रहा है, satirical, is a form of story something है, analytical है, analysis basis पे दिया है, या फिर informational है, या फिर हमें information provide कर रहा है किसी particular topic के बारे में. ठीक है. नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट, आपको पता चल जाएगा कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है, सैटारिकल फॉर्म में लिखा है, एनालिटिकल फॉर्म में लिखा है, या फिर इंफॉर्मेशनल फॉर्म में लिखा है. अब जैसे सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट. इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका, हमारे एनवायरनमेंट का. सो यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस एंड एज पर व्हिच वी विल सेलेक्ट इट. अभी नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रेफर्स टू what? Living organisms, non-living organisms, natural surroundings and physical factors. तो abiotic components ecosystem की किसको रेफर करते हैं? क्या वो living organisms की बात करते हैं, non-living की, natural, physical factors की?
लास्ट स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? हमें बताना है कि क्रॉप फील्ड नहीं है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, इनमें से कौन सा नेचुरल सिस्टम नहीं है। अब नेक्स्ट इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्लाइज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पैसेज में कहीं पे गिवन है, उसका मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे? इट इम्प्लाइज व्हाट? वेदर इट इम्प्लाइज कॉन्स्टलेशन, consternation, component and constriction. Okay, we have 4 words and accordingly we have to choose. So let's read our paragraph now. हमें 5 questions clear है कि किस question में क्या पूछा है। अब हम अपना paragraph read कर लेते हैं। That's very simple now. As it states that all organisms such as plant animals, microorganisms and human beings as well as physical surroundings interact with each other and maintain a balance of nature. All organisms, सारे organisms such as plants, animals, microorganisms और human beings और उनकी जो physical surroundings है वो क्या करते हैं? They interact with each other और उसके through वो क्या maintain करके रखते हैं? Balance maintain करके रखते हैं nature में। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. सारे interactive organisms एक area में, किसी भी particular area में with non-living constituents of environment form an ecosystem. With non-living constituents के साथ, these are the organisms and living organisms and these are the non-living. What they together form? They form an ecosystem. यहाँ पे word हमारे पास है constituent. Okay, look over here. यहाँ पे हमारे पास में है constituent. Here. ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है? वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है? वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्लाइज व्हाट? तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेटमेंट क्या है कि ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर, सारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे टुगेदर फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? आसमान में बनता है कॉन्स्टलेशन स्टार्स के थ्रू, और आयन बनता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? क्या कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है? इनकरेक्ट। अब देखो इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? कि उस एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात कर रहा है ये, कि उस एनवायरमेंट में जो चीज है, चीजें क्या होती हैं? कंपोनेंट्स होती हैं। क्या क्या है इकोसिस्टम में? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, इफ दिस इज द इकोसिस्टम तो इसके अंदर क्या है? देयर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है पैसेज में? इट मींस कंपोनेंट। Thus, an ecosystem consists of what? It consists of biotic component, which comprise living organisms, and abiotic component, which comprise what? Physical factors. अब क्या क्या physical factors है? Temperature, rainfall, wind and minerals. तो ये बोल रहा है कि एक ecosystem में क्या होता है? Biotic component होते हैं जिसके अंदर living organisms आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स आते हैं। अब इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 103 में हमसे पूछा गया है कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है? व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रेफर्स टू व्हाट? फिजिकल फैक्टर। कंप्राइज व्हाट? फिजिकल फैक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है एबायोटिक कंप्राइजिंग नॉन लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे है लिविंग है, नॉन लिविंग है, नेचुरल सराउंडिंग है। नेचुरल सराउंडिंग कहीं नहीं दिया है हमारी स्टेटमेंट में, नॉन लिविंग कहीं नहीं दिया है हमारी स्टेटमेंट में। व्हाट इज ओनली मेंशन्ड इज द वर्ड फिजिकल फैक्टर। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू हैव टू ओनली चूज द वर्ड व्हिच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज अगर आप उसके अलावा करोगे ना, अगर इफ यू विल सेलेक्ट अदर ऑप्शंस कि एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज एंड ओपिनियन ऑफ ऑथर। ऑथर के ओपिनियन और पैसेज के कंटेंट्स के बेस पे आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड ट्रीज। अगर आप गार्डन में जाओगे तो आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रास एंड ट्रीज।
फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड सनफ्लावर, और फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स भी मिलेंगे जैसे कि रोज, जैस्मिन एंड सनफ्लावर. एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, और एनिमल्स कैसे मिलेंगे? फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स. All these living organisms, they interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. अब क्या है, जितने भी organisms हैं क्या है, they will interact with each other, और उसके बाद जो इनका जो growth और reproduction है, जो abiotic factors है हमारे क्या है? Temperature, natural temperature, rainfall, wind, soil and minerals, ये affect करेंगे. So garden is an ecosystem. तो हम क्या बोल सकते हैं कि garden क्या है? Garden is an ecosystem. Other types of ecosystems और कुछ तरह के ecosystems होते हैं हमारे पास. We have forests, we have ponds and we have lakes. बाकी type के ecosystems क्या है हमारे पास? Forests है, ponds है और lakes है. These are natural ecosystems. वो क्या है हमारे? Natural ecosystems है. While garden and crop field are human made in ecosystem. Garden और crop field हम बनाते हैं तो वो human made ecosystems है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था 104, which of the following is not a natural ecosystem. अब यहाँ पे हमने यहीं पे पढ़ा है other types of ecosystems are forest, ponds and lakes and they are natural ecosystem. तो forest है हमारा गया, natural ecosystem, pond है eliminated, lake है eliminated. All these are examples of what? They are examples of natural ecosystem. Only our crop field is not. Crop field and gardens are human made ecosystem. I hope this is clear. अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 102. इसमें हमें पूछा है which of the following is a non-living constituent of the environment. Non-living constituent पूछा है हमसे. अब non-living constituent में हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक है, ठीक है. abiotic factors में दिया है wind, ठीक है. Apart from that हमारा बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया what? बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारा वो भी है. अब उसके बाद में हमारे पास ग्रास है, उसके बाद में हमारा फ्रॉग है. ग्रास व्हाट? ग्रास भी फोटोसिंथेसिस, इनहेल एक्सहेल सब होता है प्लांट्स में भी. फ्रॉग अगेन इट्स नॉट अ नॉन लिविंग, इट्स अ लिविंग. देयर इज जस्ट विंड इज देयर जो क्या है? जो नॉन लिविंग है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट इज 101. इसमें पूछा कि जनरल टोन क्या है हमारे पैसेज की. हमारे पैसेज की जनरल टोन क्या है? कि वो क्रिटिकल है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है पैसेज? नहीं कर रहा है. एनालिटिकल है. अगर एनालिटिकल होता तो यहाँ पे डेटा होता हमारे पास, ठीक है. एनालिटिकल पैराग्राफ में हमेशा पैसेज में हमारे पास डेटा प्रोवाइडेड होता है. सैटारिकल है, स्टोरी है, नहीं है. अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास. डी है इंफॉर्मेशनल. क्या ये हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑफकोर्स दे रहा है इकोसिस्टम के बारे में, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, और उसके अलावा कौन सा इकोसिस्टम के बारे में? हमें नेचुरल इकोसिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा है. बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है. So we can say that this passage is what? The general tone of passage is informational. So option number D is correct. अब next देखते हैं. Next is passage number 2. यहाँ पे देखो as we discussed, हमने वैसे ही पढ़ेंगे. पहले हम एक बार करते हैं इसके questions पढ़ लेते हैं and then we will read the passage. So it states, question number 106 is, we were actually living on the ocean implies what? हम actually ocean में रह रहे थे. इसका मतलब क्या है? That we were homeless. They were on a long voyage to Atlantic. वो एक long journey पे Atlantic में. They were without any source of income. उनके पास कोई source of income नहीं था. They were fishing deep into the Atlantic for their living. वो क्या करते थे? They were fishing deep where in the Atlantic Ocean for their living. 107 states all birds seem to leak up at night time. जितनी भी birds हैं they make a leak up at a night time. Reason ये क्या imply कर रहा है कि सारी birds एक leak बना लेती हैं रात में. Left alone, isolated at night time. Next states get together at night time and stay in groups at night time. ठीक है. अब next is 108 बोल रहा है what did the author write in his log? Author ने अपने log में क्या लिखा? They face the worst kind of fear ever experienced. उन्होंने क्या फेस किया? worst kind of fear जो उसने कभी ever experience किया होगा. They were excellent in boring and boxing और parachuting में वो excellent थे. They faced the storm bravely. उन्होंने storms को bravely face किया. Last is they starved for food
and last is they starved for what? They starved for food. अब 109 में देखो, it states they lost all hope of survival because what was the reason कि वो सारा का सारा survival का hope खो चुके? The reason is because it was freezing cold, there was no help coming to them, they were facing a severe sea storm, they were frightened by the whales and dolphins. अब वो सारा सर्वाइवल का होप क्यों खो चुके थे? पहला ऑप्शन क्या, वहां पे ज्यादा ठंड थी. सेकंड स्टेटमेंट वो इट्स सेइंग कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था. थर्ड स्टेटमेंट वो सेइंग दैट दे वर फेसिंग अ सीवियर सी स्टॉर्म एंड वो व्हेल और डॉल्फिन से डर गए थे. अब 110 states we are overtaken by the enormous feeling of humility implies that. इसका मतलब क्या है? We are overtaken by the enormous feeling of humility. They have lost faith in themselves. They were to accept from ships around them. They needed equipment and foods to survive. And last is they have accepted the strength and power of nature. Okay, यहाँ पे क्या है? 4 options है और इतना बड़ा पैराग्राफ है. Now let's okay. As we discussed food and sang every song we could remember and talk incessantly, we were slowly moving deeper into the Atlantic and we got the feeling really that we belonged there, that the ships that passed on the horizon were only hardened strangers. अब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे भी हमने डिस्कस किया था food और sang, discuss food and sang song we could remember. What? उन्होंने जितना भी खाना था वो डिस्कस कर सकते हैं, जितनी उगा सकते थे, जितनी बात को कर सकते थे. उन्होंने किया कब किया? When they were going deeper into which ocean? The Atlantic Ocean. And we got the feeling, and what feeling they got? That they belong there. कि वो वहां पे belong करते हैं. And the ships that passed on the horizon were only hurrying strangers. और जो ships हैं जो horizon को pass कर रही थी, they were only hurrying what? वो सिर्फ strangers के पास थी. We were actually living on the ocean. They were living in the ocean. We discovered that the birds all seemed to league up at night time, resting on the water by the hundreds. कि बहुत सारी जो birds हैं वो league up at night time. बहुत सारी birds हैं तो group में एक साथ होंगी वो. ठीक है, तो यहीं पे हमारा question भी था. Resting on water by the hundreds. और water पे क्या कर रही है? Rest कर रही है. When we came poking along, जब वो poking मतलब जब वो आए, we seemed so much part of the sea that the bird couldn't move until we were about 5 yards away. जबकि उसने देखा कि वो जो birds थी जो water पे rest कर रही थी, जब तक उनका ship कहाँ पे था, जब तक वो 5 yards away पे नहीं थे, तब तक वो birds वहां से move नहीं की. Then they would flutter off, leaving feathers floating on the water. और जब वो 5 yards से कम डिस्टेंस पे रह जाते थे, फिर वो उड़ जाते थे और उनके feathers वहां पे रह जाते थे. And settle again a few yards away. और फिर उड़ के कुछ yards away फिर जाके बैठ जाती थी. अब next statement states, the dolphin and the porpoises would come up at sunset and move in among us and the birds. जो dolphins थे और जो porpoises थे वो क्या करते थे? वो आते थे sunset के टाइम पे and move in among us. और जैसे वो move करता था उनका move करते थे and birds. और जैसे birds जाती थी वैसे वो dolphins और porpoises चलते. They would come up very easily under the birds, which would go up on their heels and flap their wings a bit and then settle right down again. अब क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत lazy form में आते थे. पहले क्या करते थे? अपने wings को flap करते थे और then वहीं पे settle हो जाते थे. Our next statement says that 2 whales joined us one evening and played ring around Roy so close to us that the Shay would have reached out an oar and tapped one. अब देखो उसने क्या किया कि 2 whales आई and they joined us एक evening में और उन्होंने what they played ring around noise. इतना पास आई वो कि उनकी जो आवाज थी it would have reached out an oar and tapped one. वो उनकी आवाज जो थी वो reach out हो सकती थी. ठीक है. We had calculated that we had just enough rations to make England. हमने कैलकुलेट किया कि इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए हमारे पास इनफ राशन है. But the easterly winds caused an agonizing reappraisal. But easterly winds ने क्या किया? It caused an agonizing reappraisal to them. It would have been an interesting experience,
running right down like that, but we felt we must not risk other people's life by making them search for us. मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता था रनिंग डाउन, वैसे भागना, ठीक है, बट उनको क्या फील हुआ कि उनको बाकी लोगों की लाइफ रिस्क नहीं करनी चाहिए थी. अब देखो यहीं पे आई वुड लाइक टू स्टॉप. यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट आया था, क्या बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट नाइट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी था. द क्वेश्चन वाज व्हाट? Question is, all the birds seem to league up at night implies, it is question number 107. So question number 107 में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता था? They stay in groups set together, left alone at night time, league up at night time, get together at night time. Okay, अब या फिर stay in groups. Option number C and D में से कोई एक होगा. We will read back our statement and it says that we discovered that the birds all seemed to league up at the night time, resting on the waters by the hundreds. Water को rest कर रही है in the number of hundreds. Okay, so what it states कि यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, कि यहाँ पे जो बर्ड है जितनी भी लीग अप की हुई है राइट टाइम पे, वो क्या इम्प्लाई कर रही है हमारे पास, दैट दे सुबह में उड़ जाती है पर रात में वो फिर से वापस आ जाती है. ओके, तो नेक्स्ट इज दैट स्टे इन ग्रुप्स एट नाइट टाइम्स. 5 यार्ड की डिस्टेंस पे रहती थी, जैसे शिप 5 यार्ड क्रॉस करता था फिर वो वहां से उड़ के आगे वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती थी. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज वी वर एक्चुअली लिविंग, 106 देखो, एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन. क्या है वो? दे वर एक्चुअली लिविंग इन द ओशन, वो एक्चुअली ओशन में रह रहे हैं. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएं. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें लिखा है इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ हियर, as we discussed food and sang every song we could remember, we were slowly moving deeper into the Atlantic. वो क्या कर रहे थे? they were slowly moving. और वो कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे. तो वो जा रहे थे मतलब वो एक जर्नी पे थे. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे पास कि they were on a long voyage to Atlantic. ठीक है, इंग्लैंड जा रहे थे वो. अब नेक्स्ट देखो, हम अपना आगे पैराग्राफ को रीड ऑन करते हैं. हाँ, तो कहाँ पे थे? But here we decided to accept ration from the next ship that stopped. Was it a mature decision? अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो नेक्स्ट शिप है जो रुका है वहां से हम राशन लेंगे, क्या वो एक mature decision था? This was also the time when the strain of voyage really began to tell on us. ये वो भी टाइम था कि जब जितना भी जो स्ट्रेन था voyage का वो उनके ऊपर दिखने लगा था. I wrote in my log. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी था, what did the author write in his log? तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा. Okay, I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provide fear in both boxing and पैराशूटिंग. अब इसमें बोलता है कि मैंने बहुत बार फियर अपनी लाइफ में देखा है. ठीक है, बहुत बार फियर को देखा अपनी लाइफ में. एंड इंडीड आई हैव ऑफन स्ट्रिवन टू डेवलप अ सिचुएशन दैट प्रोवाइडेड फियर इन बोथ बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग. और ऐसी सिचुएशंस भी है जहाँ पे फियर बॉक्सिंग पैराशूटिंग दोनों में लग रहा है. आई हैव नेवर नोन एनीथिंग लाइक दिस, कैन नॉट बी ओवर टुमारो और फॉर मेनी टुमारोज. अब मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है, ना तो आगे कभी देखूंगा ना फिर उसकी कभी बात. Somehow it is like being rubbed down on the sandpaper. कुछ ये ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कोई सैंडपेपर पे रब कर रहा है. I honestly do not know how many storms there have been now. कितनी storms अभी वहां पे हुई हैं. And each leaves us progressively weaker. तो जो भी storm आती थी, वो जितनी भी storm आती थी वो क्या करती थी? उनको और weak कर देती थी. तो ये उसने अपने क्या that they faced worst kind of fear. Starved for food, they faced the storm bravely and they were excellent in boxing and parachuting. अब ऑथर ने किसकी बात की है यहाँ पे? ऑथर ने बात की है फियर की यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या 108 का that they faced the worst kind of fear. जितनी बार storm आती थी, it leaves them what? It leaves them in a more disheartening condition. वो उनको और ज्यादा वीक करके जाती थी. तो यहाँ पे किसका फियर है? फियर ऑफ storm in the midst of Atlantic. अब next is Tonight we lie and wait. आज रात tonight हम क्या करेंगे? We will lie and will wait
nothing could save us if we get into difficulties. अगर आज भी कोई storm आई तो nothing could save us. No ship could get us off the seas even if it arrived in time. कोई भी शिप जो है वो उनको इस सी से हटा नहीं पाएगी, अगर वो टाइम पे आ भी जाएगी तो भी उनको बचा नहीं पाएगी. We are completely in God's hand. Okay, where they are completely in whose hand? In God's hand. At the mercy of weather, और weather की मर्सी पे है, वो भगवान के हाथ में है. All the night the wind screams louder and louder. जितनी भी बार जो wind है, it screams louder and louder. The sound of seas grows. वैसे ही किसका साउंड, सी का साउंड क्या होता है, वो बढ़ता जाता है. We talk of many things. The night train to Scotland. हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं. Night train to where? To Scotland. The many things we have done, and slowly we are overtaken by the enormous feeling of humility and a desire to return to better, to try and live a better life. अब क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, they are overtaken. किस feeling के साथ? एक desire है उनके मन में कि वो वापस जाके एक better life जिएंगे. ठीक है. The weather reached the climate at 3:00 and then declined rapidly. 3 बजे क्या हुआ, जो weather था, वेदर क्या हुआ यहाँ पे क्लाइमेक्स पे रीच कर गया और उसके बाद में वेदर जो था वो ठीक होने लगा. थैंक गुडनेस वी कुड नॉट सी द सी. और उसके बाद में व्हाट ही सेज किया, थैंक की जो अब आई कुड नॉट सी द सी. ओके, तो व्हाट द स्टेटमेंट स्टेट्स, एंड देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इज वी आर ओवरटेकन बाय द enormous feeling of humility. अब उनका क्या है, एक बहुत फीलिंग है उनके मन में किस चीज की, कि वो वापस से घर चले जाएं. तो इसमें पूछा है कि what this implies. यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, that we are overtaken by the enormous feeling of humility. What they have overtaken by, that they have lost faith in themselves. They were ready to accept help from the ships around them. They need equipment and food. They accepted the strength and the power of nature. Okay, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दिया है स्टेटमेंट में that we have overtaken by the feeling of humility. Let me highlight it for you. We are overtaken by the enormous feeling of humility and desire towards, so that they can return where? They can return back to England. Okay, वो England जा सके and they go better life. अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, they are just losing कि हाँ सारे स्ट्रेंथ जो थी उन्होंने नेचर की एक्सेप्ट कर ली. एंड नाउ व्हाट, यहाँ पे देखो, they don't need help. This is incorrect. They don't need equipments and food. This is also incorrect. They didn't have lost their faith in themselves. Okay, अब next is they have accepted the strength and power of nature with mercy. Left with option number D. और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, कि उन्होंने जो स्ट्रेंथ और पावर थी नेचर की वो एक्सेप्ट कर ली. ओके, तो उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया एज पर द स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारा आंसर नंबर क्या, कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा. They lost all the hope of survival. This question is left. Let's see why they have lost all the hope of survival. क्यों? क्योंकि वो क्या फेस कर रहे थे, they were facing sea storm. Sea storm जो कि वेदर खराब की वजह से आ रही थी and it was kept on coming. Okay, I hope this is clear. Now, next we will discuss part of. Okay, you will solve this and we will discuss in tomorrow's lecture. In question number 120, we will be discussing tomorrow. If you guys have any doubt with respect to today's lecture, please let me know. I hope this is clear. अगर आपको कोई भी doubt है, just let me know. Text me down, comment it down, and I'll solve the seminar to discuss that class. Okay, so today we have done practice questions. In the previous session, we have done these fill in the blanks and ordering of the words. One thing you will always see is ordering of words in your question paper. ये आएगा, this is fixed. Practice it. Next you will see is close comprehension. Close comprehension is also what? It is also mandatory. These are some of the favorite topics. Completion of sentence, sometimes they avoid it.
And prepositions and determiners, again the favorite topics. Okay, and this error wale questions also. Comprehension you will get each and every time. Matlab it's very like predictable कि एक comprehension minimum 1, maximum 3 to 4. ठीक है, maximum 3 to 4 you will get. A comprehension in this form. Wait, let me just clear it. Comprehensions can come in this form, and comprehensions can also come in. You will get a short paragraph and you will get 2 questions of it. इतना ही आपके पास में एक पैराग्राफ होगा, या फिर you will take one line or 2 line के आपको मिलेंगे statements, and you will be getting questions with respect to that. Okay, I hope this is clear. If you have any doubt with respect to this, please let me know. That's all for today. We will be discussing our upcoming topic in tomorrow's class. Okay, see you guys tomorrow. I will be discussing these and other questions.